Previous video we will learn how we can solve the quadratic equation by factorization method. Now in this video we will learn how we can solve the quadratic equation by completing the square method. In the completing the square method, as its name, we make a complete square then solve the quadratic equation. So we discuss the completing the square method by taking an example, and the example is that 2x square plus x minus 6 equals to 0. What we will do first in the completing the square method? Completing the square method में क्या है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी मेक दैट टर्म परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर इज आइदर a plus b होल स्क्वायर is a square plus 2ab plus b square or a minus b square. A square minus 2ab plus b square. It means in perfect square, two perfect square terms are there in both and both are positive. तो इस फर्स्ट वी मेक द स्क्वायर टर्म, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. सो व्हाट विल वी डू, हम क्या करते हैं, इफ एक्स स्क्वायर हैविंग अ कोफिशिएंट 1, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो उसको एज इट इज रहने देते हैं. इफ द एक्स स्क्वायर हैविंग अ कोफिशिएंट अदर देन 1, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा और कुछ है, देन वी डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं. सो हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2. So we divide the whole equation by 2. Let's divide. This is x square. Divide equation by 2. Let's divide. This is x square. Coefficient of x is 1. So this is 1 upon 2x minus 6 upon 2, 3 equals to 0. This is our first step. After the first step, we shift the constant to the right side. हम constant को क्या करते हैं, right side में shift करते हैं. So here the constant is -3. So shifted it to right side. That is x square plus 1 upon 2x equals to 3. Now this term is a perfect square. So we write x square plus 1 upon 2x equals to 3. Now in the perfect square, there are two perfect square terms. दो perfect square term है. Here is only one. So we find out the other. हम दूसरा perfect square find out करेंगे. दूसरा perfect square term को find out करने के लिए, that is in both the perfect square, this is 2ab. So that is equals to 2ab. So we write 2ab equals to 1 upon 2x. We let this is a square and this is 2ab. So 2 value of a is x into b equals to 1 upon 2x. X and x cancel out. B equals to 1 upon 4. Clear? What is the value of b? b is 1 upon 4. तो हम क्या करेंगे, 1 upon 4 का we add 1 upon 4 square of 1 upon 4 on both sides of equation. दोनों तरफ क्यों करेंगे, so that the equation becomes balanced. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे या केवल राइट हैंड साइड में करेंगे तो इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी. सो एड 1 upon 4 square on both sides. तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 upon 2x एड स्क्वायर ऑफ 1 upon 4 बोथ साइड प्लस 1 upon 4 square equals to 3
plus 1 upon 4 square. Now this is a square, this is b square. Write a square plus this is b square. Now both the term, this is 2ab. So we write it 1 upon 2x as 2 into a is x into b is 1 upon 4. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 2x. 1 अपॉन 2x ही रहेगा. सो नाउ इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर ऑफ 4 इज 60. नाउ सॉल्व. This is a square plus b square plus 2a and b. So this is x plus 1 upon 4 whole square. Left hand side becomes x plus 1 upon 4 whole square equals to, here we take the LCM 16. This is 48 plus 1. Now x plus 1 upon 4 equals to 49 upon 16. X plus 1 upon 4 square. So x plus 1 upon 4 equals to root 49 upon 16. It means x plus 1 upon 4 equals to plus minus square root of 49 is 7 and square root of 16 is 4. First we once time we take the positive sign. एक बार हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव. We write if x plus 1 upon 4 equals to, we take positive 7 upon 4. So x equals to 7 upon 4 minus 1 upon 4. That is x equals to 4 LCM 7 minus 1. So x equals to 6 upon 4. Divided by 2. So therefore x equals to 3 by 2. X equals to 3 upon 2. Now if x plus 1 upon 4 equals to minus 7 upon 4. तो x equals to minus 7 upon 4 minus 1 upon 4, that is equals to minus 8 upon 4. 4 2 जा, x equals to minus 2. तो हम क्या करेंगे, वैल्यू क्या है, x equals to 3 upon 2 and minus 2. I again revise. मैं दोबारा से बताता हूँ. वेरी सिंपल मेथड इज दैट. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा कोफिशिएंट और नॉट. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इट मींस इट इज 1. अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है, वी डिवाइड द हियर टू कोफिशिएंट का, तो हमने क्या किया, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से डिवाइड किया 2. हियर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 minus 3 equals to 0. After the first step, we shifted the constant part at the right side. Constant part क्या था, -3, हमने उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया. Then what we will do, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं. सिंपली see the coefficient of x, only coefficient without sign. x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2. जो भी x का कोफिशिएंट आएगा मल्टीप्लाई इट बाई 1/2. एक्स के कोफिशिएंट को हमारे बार 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4. एक्स के कोफिशिएंट से 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें नंबर या फ्रैक्शन मिलेगा, एड द स्क्वायर ऑफ दैट ऑन बोथ साइड द इक्वेशन. उसके स्क्वायर को हम इक्वेशन के दोनों साइड में उसके स्क्वायर को ऐड कर देंगे. हमने यहाँ किया हुआ है. आफ्टर दैट we write it in the square form, in the form of either
a minus b whole square or a plus b whole square. Here a square plus b square, b split 1 upon 2 x as 2ab. तो ये क्या हुआ, ये a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, वी सॉल्व द राइट हैंड साइड, that is 49 upon 16 and then solve and find the value of x. Clear? Another example and solve it by completing the square method. First we check the coefficient of x square is not 1. x square का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा डिवाइड होल इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे. सो डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर √2. सो डिवाइड होल इक्वेशन बाय √2. द इक्वेशन बिकम्स डिवाइड इक्वेशन बाय √2. divide, that is x square, plus if we divide it, that is 7 upon √2x, plus if we divide 5√2 by √2, this is 5 equals to 0. मैंने बताया ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. इन द सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, we shifted the constant part at the right side. Constant part is this one, so we shifted right. X square plus 7 upon √2x equals to -5. After that simply कुछ नहीं करना है. Write the coefficient of x. What is the coefficient of x? Coefficient of x is 7 upon √2. 7 upon √2 is the coefficient of x. Multiply the coefficient of x by 1 upon 2. x हमेशा x के कोफिशिएंट को 1 upon 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. If we multiply it by 1 upon 2, we get 7 upon 2√2. Now we add the square of 7 upon 2√2 on both sides. So adding 7 upon 2√2 square both side. हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ इसके कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करेंगे. सो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 7 upon √2x प्लस 7 upon 2√2 square equals to -5 plus 7 upon 2√2 square. Now write in the perfect square form. This is a square, this is d square, plus 2 is this x and b is 7 upon 2√2. Check, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट इज दिस, 7 upon √2 equals to -5 plus square of 7 is 49, square of 2 is 4 and √2 is 2. 4 into 2 8. Now this is a square plus b square plus 2a and b. So this is a plus b whole square. It means x plus 7 upon 2√2 square equals to, taking a LCM 8, that is -40 plus 49. So we solve it. This is x plus 7 upon 2√2
square equals to minus 40 plus 49, that is 9 upon 8. Therefore x plus 7 upon 2 root 2 equals 2 plus minus root 9 upon 8. So x plus 7 upon 2 root 2 equals to plus minus 3 upon root 8, और हम root 8 को लिख सकते हैं 3 upon 2 root 2. हमने कैसे लिखा रूट 8 को? रूट 8 को हम लिख सकते हैं रूट 4 इंटू 2, स्क्वायर ऑफ रूट 4 is 2, square root of 4 is 2, and that is 2 root 2. Clear? Now once we take positive and negative, first if x plus 7 upon 2 root 2 equals to 3 upon 2 root 2, हमने पॉजिटिव ले लिया तो x equals to 3 upon 2 root 2 minus 7 upon 2 root 2, that is minus 4 upon 2 root 2. 2 2 जा 4 और ये रूट 2 से रूट 2 टाइम्स, तो क्या हुआ x इक्वल्स टू माइनस रूट 2. क्लियर? नाउ टेक इफ, अब हम पॉजिटिव ले लें, x प्लस 7 अपॉन 2 रूट 2 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2, तो x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2 minus 7 upon 2 root 2, that is equals to minus 10 upon 2 root 2. 2 5s are 10, that is minus 5 upon root 2. अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लाई इट बाई रूट 2 अपॉन रूट 2. Clear? And solve it. So x becomes minus 5 upon root 2 into root 2 upon root 2. ये हो जाएगा minus 5 root 2 upon 2. So two values of x are there, minus 5 root 2 upon 2 and minus root 2.